पंचम टेस्ट है देखो पेपर मिले क्या और इको का है ना एग्जाम पेपर या तो हाँ मैंने देखा था इको में कुछ इवेंट्स हैं सचमुच में मैथ्स का डिफिकल्ट लगा या तो मुझे डर लग रहा है हां क्वेश्चन पेपर्स लगे क्या लेकिन मेरा चिट्टू में तुम्हें कितना मिला क्वेश्चन टेस्ट में अब तक नहीं गया आ जाए इसमें मैं लोग के बीच में बैठा हूं नहीं पीछे बैठ गई क्योंकि सो रही थी व्हाई सो रही थी
एसी बंद करके बोल चलेगा ना एसी बंद किया तो हाँ नहीं करना हाँ मेरा ज्योग्राफी का क्या है एग्रीकल्चर का है ज्योग्राफी से ठीक है और साइंस हो गया आज हिस्ट्री करूँगा कल हिस्ट्री करूँगा कंप्यूटर कब करेगा कंप्यूटर एक दिन में हो जाता है पिछले वाले दिन में 49 है अबे मुझे पूरी डिस्कशन भी बंद कर अच्छी कर सकते हैं तो क्लासेस पर टेंशन दोनों हो जाए और प्रैक्टिकल को मार्क्स देते हैं प्रैक्टिकल कहाँ है हां नवीन कोण आहे इसी बंद करायचं आणि इकडे अरे नाही करूला नाही प्रॅक्टिकल तुला राइट साउंड्स तो कोई नॉर्मल नहीं ए उधर से यार ओ आई डोंट वांट रात का देखो मेरा सबसे फेवरेट ईवन है सब यूट्यूब क्लास से इसमें टी मास्क ऑफ पांडा मास्क देसी गाने सुनो एक दो ही है सब बच्चे कहाँ चले गए टाइम पास कर रहे हो क्यों टाइम पास वॉशिंग करना लास्ट लेक्चर का सब समझ आया सब बोले थे फिजिकल दिखाएंगे अच्छा ये वो याद नहीं रहता क्या बोला था थोड़ी देर पहले ये देखो ये जो कार्ट्रिज है ऐसा दिखता है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सब है ऑलरेडी ठीक है ये देखो तो ये पोर्सिलिन टाइप का है और ऐसा है ये पोर्सिलिन फ्यूज यूनिट कितना है तो दिया क्या पैसा करंट यहाँ से 250 नहीं ये नहीं तो स्नाइडर का या ये भी स्नाइडर का ये तो एमसीबी है ठीक है एमसीबी सर ये इलेक्ट्रिक रूम रहता है ना जिसमें बहुत सारे मीटर लगे रहते हैं वो किसका रहता है इस चीज क्या तुम्हारे सोसाइटी में जितने फ्लैट है हर फ्लैट का मीटर है वो बिल कैसे आएगा सबका अलग अलग सबका ये फ्यूज है देखो ये फ्यूज वायर ये दिख रहा है यहाँ फ्यूज वायर कनेक्ट होता है और फिर इसमें डाल देते हैं फ्यूज वायर तो ये कनेक्शन जो है ये वाला लाइव का एक साइड ये लाइव का नीचे का साइड और ये जब अंदर घुसाएंगे फुल कनेक्शन हो जाएगा चलिए यूज होता है क्या चीज हाँ मीटर रूम में जाके देखो अपने सोसाइटी में ऐसा करंट देखने में थोड़ी करंट लगेगा उंगली मत करना किधर वॉचमैन को बोलो दरवाजा खोलो मेरे को ये देखना है ठीक है देखो ये बाइक में लगने वाला फ्यूज अलग अलग फॉर्म में आता है पोर्सिलिन टाइप का है जल्दी जल्दी
ये पोर्सलिन टाइप का है, फिर तुम्हारा ये फ्यूज वायर जो कार्ट्रिज टाइप का है, और ये क्या है, बाइक का है, बाइक में सेल्फ स्टार्ट होती है ना, ठीक है, तो ये उससे करंट जा रहा है, अगर ये उड़ गया तो कभी कभी बाइक तुम्हारी स्टार्ट नहीं होती, ये फ्यूज वायर। इस पे देखो सब रेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ ये देखो 2 एम्पियर दिख रहा है, ये 2 एम्पियर दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये 2 एम्पियर से ज्यादा करंट के अंदर अगर तुमने इसको लगाया तो उड़ जाएगा। हाँ, बल्ब, छोटे छोटे बल्ब 2 एम्पियर से ज्यादा, ठीक है। स्पाइक का ये कहाँ पे डालते हैं ये तुम्हें पता है? तुम्हारे घर में है ये, लेकिन तुम्हें पता नहीं। स्पाइक गार्ड, ये देखो, ये देखो, ये रेड डॉट है ना, रेड ये वाला, ये इसको जब खोलोगे तो उसके अंदर वो कार्ट्रिज जैसे निकलेगा, निकाल खोल के देखना घर पे, लेकिन ये खोलने से पहले ये जो उसका पिन है ना ये बाहर निकालना, फिर खोलना। और अगर पीसी कुछ चालू है और तुम्हारे पापा या फिर भाई कुछ गेम खेल रहा है, पहले उनसे गेम बंद कराना, नहीं तो पड़ेगी मार, ठीक है, समझ आया? They will see that you are bothering them, ऐसा। तो ये देखो, ये सॉकेट है और ये पिन है, अभी हमको ये सब सीखना है। अर्थिंग बता दिया था लास्ट क्लास में, कोई क्वेश्चन है अर्थिंग के ऊपर? अर्थिंग क्या है? तो हमने लास्ट क्लास में 2 चीज कवर किया, फ्यूज एंड अर्थिंग। ये दोनों क्या है? सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी मैकेनिज्म है, ठीक है। फ्यूज और अर्थिंग दोनों कवर हो गया, फिट वेट बना गया। और हमारा क्या है? अरे कराया ना मैंने, क्या बोला था? 2 to 3 मीटर। सुनो, चलो कर लेते हैं अर्थिंग फिर से। अभी हमने क्या देखा था? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ये 3 आता है ना। अर्थ वायर कहाँ पे कनेक्ट होगा? अर्थिंग में। अर्थिंग कहाँ पे होता है? हर सोसाइटी में अर्थिंग पिट बना होता है, वो दिखेगा नहीं क्योंकि उसको कंसील कर दिया ना, गड्ढा। तो पहले क्या करते हैं, हमने खोदा एक गड्ढा, ठीक है, गड्ढा खोदा, तो कितना मीटर है? 2 to 3 मीटर डीप पिट, ये पहले तुमने खोदा है, ठीक है। फिर उसके अंदर यहाँ क्या मिक्स किया? चारकोल एंड सॉल्ट मिक्स, चारकोल और सॉल्ट मिक्स, ठीक है, चारकोल एंड सॉल्ट मिक्स, ये डाल दिया। अब क्या किया उसमें? आधा, हाफ मीटर बाय हाफ मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर का कॉपर, थिक कॉपर प्लेट डाला। क्या डाला? थिक कॉपर प्लेट। अब इससे यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया, थिक कॉपर वायर। थिक क्यों? बिकॉज इट कैन कैरी हाई करंट, समझ आया? अब ये तुम्हारा हो गया अर्थिंग वायर, जिसको तुमने नीचे से लेके सब जगह फैला दिया। ये जो थर्ड वायर है ना, हर घर के बाहर ये जाके खड़ा हो जाए, और साथ में जो बाहर से वायर आए थे, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, वो भी आएगा। तो जो बाहर से जो अर्थ वायर आ रहा है, अब देखो, लाइव, ऊपर वाला लाइव है, ये न्यूट्रल है, और ये अर्थ जो बाहर से है। बाहर से भी जो अर्थ आ रहा है वो कहाँ मिल जाएगा? तुम्हारे सोसाइटी के अर्थ में मिल जाएगा, समझ आया? तो लाइव न्यूट्रल तो हर जगह घूम ही रहा है तुम्हारा, ठीक है, और ये हो गया अर्थ वायर। इसी से तुमको जहां आगे आगे घुमाना है उसको घुमा लो। ये जो तुम्हारी रिंग हो गई, जो रिंग बताया था मैंने,
और तुम्हारा यहाँ जा रहा है, तो उसमें हमने क्या लगाया, कॉपर प्लेट, और फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया उसको, ये वायर डायरेक्ट नहीं डालते हैं, कैसे डालते हैं, एक पीवीसी पाइप, प्लास्टिक पाइप का कवर डाल दिया उसको, और अब ये पिट हमने कर दिया क्लोज। ठीक है, ये पिट क्लोज कर दिया, एक्टिविटी भर के क्या कर दिया। ठीक है, चारकोल सॉल्ट मिक्स इसलिए किया सो दैट देयर इज अ बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन अर्थ एंड कॉपर प्लेट। अब क्या होगा, थोड़े थोड़े वीक के बाद में पानी डालते रहने का, ठीक है, वाटर, तो उससे क्या करेगा, वो चारकोल सॉल्ट के साथ मिक्स होके इट विल प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी विद ग्राउंड। ठीक है, मॉइस्ट रखेगा, मॉइस्चर होगा तो उसका कनेक्टिविटी बेटर है। अब यहां से तुमने लाइट दे दिया, न्यूट्रल दे दिया, अर्थ दे दिया, ठीक है, सारे कनेक्टिविटी दे दिए तुमने। ऑलराइट, अब जिसको कनेक्शन देना है तो समझ आ गया। तो ये नहीं बताया था मैंने लास्ट क्लास, फिर क्यों मेहनत कराया फिर से, ये बताया था एक्चुअली। ओके, अच्छा, अब क्या है, स्विचेस है, स्विचेस। स्विचेस में क्या है, अब एक हमारा कोई भी अप्लायंस हमने ले लिया, अप्लायंस को क्या बोलते हैं, लोड। ठीक है, ये लोड कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इधर से हमने लगाया क्या, मेंस, ये हमारा क्या है, मेंस। मेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये जो दोनों है इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, लाइव और न्यूट्रल के बीच में 220 वोल्ट्स है, यही हमारा क्या है, मेंस है। ठीक है, यानी ये जो सॉकेट है इन दोनों के बीच में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, 220 वोल्ट्स हर जगह। ठीक है, और हमने देखा है कोई भी हम डिवाइस यहाँ कनेक्ट करते हैं तो ये अगर हमारा लोड है ना, ये लोड है हमारा, तो इन दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस आ रहा है कितना बोल रहा है, 220 वोल्ट्स, क्योंकि हर डिवाइस हमारी पैरेलल में है, एनी डिवाइस वी कैन कनेक्ट लाइक दैट। ठीक है, वैसे अगर हमने यहाँ पे सॉकेट कनेक्ट कर लिया, सॉकेट में 3 होता है, ये वाला अर्थ है, ये वाला, ये लाइव है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो लाइव वाला किसको कनेक्ट हो जाएगा, इसको कनेक्ट हो गया, न्यूट्रल किसको कनेक्ट होगा, इसको कनेक्ट होगा, अर्थ किसको कनेक्ट होगा, इसको कनेक्ट होगा। ठीक है, अब जो भी पिन लगा के जो भी डिवाइस है, अब जब हमने इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे पास, ठीक है, अब ये पिन यहाँ पे पिन लगा है और ये वायर इधर कनेक्ट हो गया, उसमें तीनों वायर है, ठीक है ना, जो भी पिन लगाया तो उसमें तीनों वायर है, तो अब इसको क्या है, अर्थिंग भी है, लाइव न्यूट्रल भी है। समझ आ गया, ऐसे कनेक्ट करना है। तो स्विच कहाँ लगेगा इसमें, डायरेक्ट हम लोड ऐसा हमेशा तो ऑन नहीं रखते, तो अपने को जब ऑन करना है तभी हमको स्विच ऑन करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी ये क्या हो गया, ये ऑन है कि ऑफ है, ऑन है कि ऑफ है, ऑफ। ये जब टच करेगा तो ऑन होगा। ठीक है, अभी एक साइड हम लाइव मानते हैं तो दूसरा साइड क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, तो लाइव में क्या रहता है, हमेशा करंट होता है, इसको लाइव भी बोलते हैं और फेज भी बोलते हैं, फेज वायर। ठीक है, फेज और लाइव, दूसरा क्या है, न्यूट्रल। स्विच ऑन करेंगे मतलब क्या करेंगे, जब ये इसको टच करेगा मतलब हमारा स्विच ऑन है, तब इसमें से करंट अंदर घुसेगा
और न्यूट्रल से रिटर्न। ठीक है, स्विच से पहले हम क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। हर एक डिवाइस का जो फ्यूज है वो यहाँ पे लगे, ये फ्यूज है। ठीक, तो दिस इज फ्यूज एंड दिस इज स्विच। तो स्विच में क्या बताना था, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड ऑन द लाइव साइड। ठीक है, सो दैट अगर हमने ऑफ कर दिया तो once the switch is off, no current is reaching the load. Okay, that's why fuse as well as switch is connected on the live side. If we are connecting the fuse or switch on the neutral side, then what happens? If we switch off, let us say we connect the fuse on the neutral side. ये तुम्हारा load है. This is his mains. This is the live side. और ये तुम्हारा न्यूट्रल साइड। ठीक है, एल एन करते हैं। ठीक है, एल मीन्स लाइव, एन मीन्स न्यूट्रल। अब तुमने स्विच यहाँ पे इधर फ्यूज लगाया है और यहाँ पे स्विच लगाया। ठीक है, तो करंट तो इधर से ही जा रहा है। करंट कहाँ से एंटर होता है, लाइव से, और रिटर्न कहाँ से होता है, न्यूट्रल से। अब तुमने समझो स्विच ऑफ कर दिया, लेट अस से योर स्विच इज ऑफ। ठीक है, there is no current running, device is not functioning, but the current is reaching till the device. So accidentally if you touch it and let's say there is a short circuit between the body of the device and the light, so body के अंदर there is current but device is not functioning because the circuit is not complete. But if you touch the device, current will go through your body to ground. तो करंट कहां से चला जाएगा, तुमको शॉक देते हुए अर्थ में पहुंच जाएगा। So you'll get a nice shocking experience. ठीक है, ऐसा कैसे होगा। ठीक है, डांस अगर नहीं आता तो डांस करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है। इसलिए स्विच अगर हमने न्यूट्रल साइड में लगाया है और कहीं गलती से इसका लाइव वायर बॉडी को टच हो रहा है तो तुम्हें बैठेगा तगड़ा झटका। तुम तो सोच रहे हो अरे स्विच ऑफ है, ठीक है, फिर भी करंट लगेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा स्विच हमको लाइव साइड में लगाना। ये हो गया। अब ये जो स्विच है जो सिर्फ लाइव को कनेक्टेड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल पोल स्विच। क्या बोलते हैं, सिंगल पोल स्विच। एक ड्यूअल पोल स्विच भी आता है। अब जैसे ये लोड है, देखो समझो ये लोड है, ये लाइव है, ये न्यूट्रल है ना। तो ये लाइव है, ये न्यूट्रल है। तो सिंगल पोल में हमने कैसे लगाया था, सिर्फ लाइव में स्विच लगाया है ना, ऐसे लगाया था। लोड में जाके ऐसे वापस आ गया और यहाँ तुम्हारा मेन कनेक्शन है। ठीक, लेकिन एक दूसरा स्विच आता है, वो कैसा आता है, ड्यूअल पोल। तो ये कैसे कनेक्ट होता है, ऐसे। रिमेंबर द मेन स्विच, ओपन किया तो लाइव से भी कनेक्शन कट, न्यूट्रल से भी कनेक्शन कट। क्लोज किया तो ये कैसा हो जाएगा, दोनों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ड्यूअल पोल स्विच। मतलब चिंता ही नहीं, कहीं पे भी लगाओ, मतलब दोनों ही कनेक्टेड है। एक बार ओपन हो गया तो ना तो लाइव से करंट जा रहा है ना न्यूट्रल से आ रहा है, कुछ नहीं, दोनों कट हो गए। So this kind of switch is called dual pole switch. तो obviously ये क्या होगा, महंगा होगा, because it is a bigger device. ठीक है, समझ आ गया। Then you have switch का कनेक्शन देख लिया। अब क्या है, वायरिंग, राइट, कलर कोडिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर। और कुछ है क्या इसमें, डुअल स्विच नहीं है ना। ठीक है, अर्थिंग हमने कर लिया, अर्थिंग ऑफ अप्लायंस कर लिया।
अब color coding of the wire and 3-pin plug and socket. 3-pin plug और सॉकेट क्या होगा? देखो सॉकेट तो दिख रहा है, 3-pin plug, उसमें कितने पिन होते हैं? 1 pin for earthing and 2 small pins for ये हो गया, ठीक है। तो एक हो गया लाइव और एक हो गया न्यूट्रल, ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये है वायर। तो ये तुम्हारा जो है लेफ्ट साइड क्या है? लाइव, राइट साइड वाला पिन क्या है? न्यूट्रल, और जो थिक है वो क्या है? अनथिक। ये हो गया तुम्हारा प्लग जो पिन है, और ये कहाँ जाके फिक्स होगा? सॉकेट के अंदर। तो सॉकेट में कैसा होता है? इसको फिट करने के लिए बड़ा होल, इसके लिए छोटा होल। तो अब ये लाइट लेफ्ट में दिख रहा है ना, वो अब इसमें राइट में है, और ये अर्थिंग इज अ बिगर होल, सो यू कैन नॉट मिसप्लेस द पिन, एक इसी डायरेक्शन में ही फिक्स होगा, एवरीथिंग विल गो एंड फिट देयर। अब इसको ऑन ऑफ करने के लिए देयर इज अ स्विच, ठीक है, इसमें स्विच होगा, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, एक पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड सॉकेट, इसको क्या बोलते हैं? प्लग, ठीक है। तो इसमें अभी जो हमारे घरों में होता है आजकल, इंस्टेड ऑफ देयर आर 2 स्मॉल पिन्स आल्सो। अब जैसे मोबाइल चार्जर है, उसमें तो 3 पिन होता नहीं, ये किसमें होता है? हाई करंट वाले डिवाइस में, इलेक्ट्रिक आयरन में हो गया, गीजर में हो गया, ठीक है, एयर कंडीशनर में हो गया, ऐसे मोटे पिन होते हैं। एयर कंडीशनर का अलग टाइप का भी आता है, ठीक है। फिर जैसे मोबाइल चार्जर में कैसा प्लग यूज होता है? इसको 2 ही पिन होता है ऐसे, ठीक है। ये इसमें यूज होता है, ये देखो यहाँ पे 2 है ना ऊपर, 5 होल्स, तो 5 होल वाला तुमको नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, खाली 3 वाली, ठीक है, ये भी नहीं। तो दिस इज आल्सो प्लग, ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया तुम्हारा प्लग एंड सॉकेट। अब देखो, while dealing with plug and socket, your hands should be dry, ठीक है, and you should take precaution not to touch the pin, मतलब ऐसे पकड़ के और ऐसे लगा, मतलब कि कैसे, ऐसे पकड़ा हुआ है और पिन टच हो रहा है और उसमें घुसा रहा है, ठीक है, तो घुस नहीं पाएगा ठीक से, उससे पहले शॉक लग सकता है अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो, या इसको डालते टाइम झटके से क्या स्विच भी ऑन हो गया और ये घुस रहा है और तुम्हारा फिंगर भी टच कर रहा है पिन को। सो देयर आर मेनी प्रोसेस, इसलिए घाई नहीं करने का, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आराम से हैंडल करो, डोंट प्ले विद इट, ठीक है। तो क्या प्रिकॉशन लेना है बुक में दिया है, द हैंड्स मस्ट बी कंप्लीटली ड्राई, ठीक है, और ये फॉर्मली फिक्स होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि लूज होगा तो क्या होगा, उसमें स्पार्किंग निकलेगी, ठीक है, तो फायर कैच कर सकता हो, इट शुड बी फॉर्म, नहीं है फॉर्म, रिप्लेस करो, टाइम टू रिप्लेस, ठीक है। तो ये है, प्लग पिन शुड फिट इन द सॉकेट टाइटली, लूज नहीं होना चाहिए, ये तो कभी स्पार्क की आवाज आई है, चट 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 ऐसा स्पार्किंग आता रहेगा, और वो कभी any loose connection will give rise to sparking and burning of either the socket or the plug. तो प्लास्टिक जलेगा, स्पार्क होते 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 बहुत गंदी बदबू आएगी, एंड कई बार पब्लिक सोता है रात को और सवेरे उठ नहीं पाता, बिकॉज वो स्मोक इज लीथल समटाइम्स,
Have you seen people play laptop पे बेड पे लैपटॉप पड़ा है, सो गए और उसकी जो बैटरी है ना कभी कभी तो वो इट कैचेस फायर, वैसा भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. तो यू शुड यूज द डिवाइस, कंप्लीटली शट इट डाउन, ऑफ करके बेड से हटाओ पहले, ठीक है, फिर सो जाओ. ठीक है, तो वो जो स्मोक निकलती है ना, कभी कभी कार के अंदर भी लोग एसी चला के सो जाते हैं एंड देन दे डाई आल्सो, बिकॉज जो गैस लीक होती है वो स्मेल नहीं करती. योर नोज विल नॉट बी एबल टू फील द स्मेल ऑफ इट बिकॉज इट इज टेस्टलेस, या समझ नहीं आती, बट इट विल मेक यू अनकॉन्शियस एंड देन यू मे कंप्लीट द फाइनल जर्नी. ठीक है, गिविंग शॉक्स टू योर नियर एंड डियर वंस. तो ये सब थोड़ा प्रिकॉशन लेना है. डोंट बी स्केयर्ड. We just change bodies. We don't die. You know that, no? We don't die. We just change bodies. Like shirts, clothes. So this body, like this is the Hindu way of believing things. The soul never dies. We just change bodies. So when a person is dead, don't say "Acha hua mar gaya." So he is just left the body and watching everyone. कौन क्या बोल रहा है? Okay, all right. So depends from different religions. So like I think in Christianity they say rest in peace, meaning the soul goes to permanent. So Christianity and Muslims, they don't believe in reincarnation, but Hindus do. So in our case, if it is a Hindu dead body, be careful. What to say, what not to say. And we believe the same for Christians and Muslims also. So respect that body as well. When you are not going to say anything bad. ठीक है? चलो. What else? Safety precautions while using the electricity. तो वही है, मतलब hands should be dry, all right, and the contact should be firm. There should be no loose contacts, all right. That's it. And avoid touching the live connection and fix the socket only, then switch it on. When you are removing the socket, it should be switched off, then remove. So these are the basic precautions. And in the lab, don't try to be in a hurry. कि मैं first कर लूँ. There is a competitive spirit while you are in the lab, right? Don't do that. Okay? Wait for your turn. Don't rush anywhere, right? Especially if it is electricity, chemistry, right? So, थोड़ा आराम से. Last is color coding of the wire. Color coding of the wire. Of the wire. What is it? So we had how many types of wire? Live wire, neutral wire, and arc wire. Okay. So these wires are in different colors because if you see this one main wire, so if you peel the insulation, there will be two wires because it doesn't have earthing, it's a thin wire. So दो wire मिलेगा. So you only have live and neutral. So in the old system, live was of red color, neutral was of black color, and earth was green, right? In the new system we have live wire is brown, neutral is light blue. So and earth is yellow or green. So when anybody dies, how do we greet or how do we pass the condolences? So rest in peace, RIP, many, okay. So as a Hindu we say Om Shanti.
We do Shanti, we don't say rest in peace, right? Because for us, the soul is liberated till it finds a new body. Okay? And for Christians and Muslims religion, they say rest in peace. So this I also discovered recently, and I have rested so many souls. So ये जो मालूम पड़ा, because those people like who follow it, like मरेंगे लोग तो मालूम पड़ेगा ना. So तो ये recently पता चला मेरे को. I thought I'll share it with you. I think everyone can say rest in peace, right? No, so rest in peace means that soul will now not find a body, because it will not reincarnate and will not find another body. But in our case, till it finds a new body. So then Om Shanti, Shant raho tab tak, बाद में आ जाना, ठीक है? So it's like that. In Christians, we only say rest in peace. Rest in peace, yes, and yeah. So it's important, right? Because if he doesn't rest in peace, then it can cause havoc to others, right? Rest in peace. Okay. So Shanti karate na. We do Shanti and Havan and all that. So every religion has their own method. It's very, very interesting. So you should never be scared of all these things. You should try to learn about it. Become more aware. There's nothing to be scared. Are we all going to remain in this body forever? No. Okay? So it's a natural thing. Nobody can run away from it. So it's better to understand it so that you be calm in those tense moments. Okay? All right. Difficult to be calm because there's so much of disturbance. Okay, so with this chapter is over, right? So she has a down. Yeah, about the that's what. Okay. Bolo. And about that earth fire. She has doubt about what is the thing. You don't have it. Not me, she has a doubt. I said you don't have earthing now. No. Clear it to her. Yeah, I cleared it to her, but then Clear now? So what was the doubt and how did she clear it to you? I think she didn't listen to me. She was laughing at it. बोलो क्या था डाउट अर्थिंग क्या है, ठीक है? सो अर्थिंग में क्या होता है, देखो लाइक आई सेड देखो लेट्स से देयर इज दिस इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक आयरन है, यू आर हैंडलिंग इट. अब इलेक्ट्रिक आयरन में क्या है, एक तो लाइव कनेक्शन क्या है, ठीक? देन यू हैव अ न्यूट्रल कनेक्शन. तो आयरन के अंदर क्या है, आयरन के अंदर देयर इज अ हीटिंग एलिमेंट. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्या है, हीटिंग एलिमेंट. हीटिंग एलिमेंट है ना आयरन के अंदर. सो व्हेन द करंट इज पासिंग, तो ये हीटिंग एलिमेंट हॉट हो गया, तो जो आयरन प्लेट है नीचे का ये पूरा हीट हो गया, ठीक है? नाउ यू कैन आयरन, ठीक? सो व्हेन यू आर हैंडलिंग द प्रेस, ये जो वायर है ना बहुत मुड़ता रहता है, लाइव वाला, ठीक है? सो ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड यूसेज, in some cases this insulation might break and it might touch the metallic body. समझो ये आयरन का जो बॉडी है वो मेटल का है, आजकल तो सब प्लास्टिक फाइबर का, बट इन ओल्ड डेज इट यूज्ड टू बी लाइक स्टील हेवी आयरन, ठीक है? तो ये लाइव अगर ब्रेक होके बॉडी को टच कर रहा है, तो अब क्या हो गया, बॉडी में करंट है, बॉडी में क्या है, करंट है. और ये जब तुम ऐसे पकड़ रहे हो और तुम्हारा फिंगर टच हो गया, तो क्या होगा, करंट. अब जैसे तुमने यहाँ पे पकड़ा है इसको, ठीक है, ठीक? तो अब तुम जैसे मान लो ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, यहाँ तुम आयरन कर रहे हो और तुमने चप्पल नहीं पहना, ठीक है? यू आर स्टैंडिंग बेयर फुट, सो देयर इज अ कनेक्शन ऑफ योर बॉडी विद द ग्राउंड डायरेक्टली. अब तुमने इसको टच किया, इसमें से करंट कहाँ गया,
तुम्हारे बॉडी से होते हुए ग्राउंड में, तो यू आर कंडक्टिंग करंट, तो उस वक्त तुम क्या करोगी? भरतनाट्यम नहीं आते हुए भी करोगी, ठीक है, क्योंकि शॉक लगेगा। ये बॉडी में करंट है ना, लाइट टच कर रहा है उसको। अभी ये करंट कहां से चला गया? तुमने इसको पकड़ा तो तुम्हारा फिंगर नीचे बॉडी को टच हो गया इधर ऐसा। अब क्या हो गया? इसमें से करंट गया, तुम यहाँ नीचे खड़ी हो, ठीक है। कहां से जा रहा है करंट? ये जो करंट इधर जा रहा था, इधर से तो जा ही रहा है, लेकिन अब तुम्हारे बॉडी में से होते हुए कहां जाएगा? ग्राउंड। अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। तो टू अवॉइड दिस व्हाट वी डू इज, ये जो बॉडी है ना, अब जो अर्थ है वो किधर कनेक्ट होता है? ये बॉडी के अंदर ही कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट किया है? जो आयरन का जो केसिंग है ना, मेटल केस, द अर्थ वायर इज कनेक्टेड देयर। ये जो अर्थ वायर आ रहा था, इट इज कनेक्टेड देयर, और उसको हम कहां पे दे देंगे? ये जो बाहर से अर्थिंग आई थी कंपनी वाली, ठीक है। अब जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक वाला जो सॉकेट है, ये अर्थ कनेक्टेड है ना, तो आयरन जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक आयरन है, इसमें से एक लाइव में गया, एक न्यूट्रल में गया, और एक अर्थ वायर जो है वो कहां से जा रहा है? जो बॉडी है, तो ये यहां से कहां चला गया? अर्थ में घुस गया। होता क्या है, तुम्हारे बॉडी का रेजिस्टेंस अर्थ के रेजिस्टेंस से ज्यादा है। अर्थ इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ करंट, तो ये करंट तुम्हारे बॉडी में ना जाके वो किधर चला जाता है? अर्थ में चला जाता है, तो तुमको शॉक नहीं लगेगा। समझ आया? तो अर्थिंग इसलिए प्रॉपर होना बहुत जरूरी। ओके, चलो ये लास्ट क्लास में बताया था, तो अभी तुम नहीं प्रेजेंट थी इसलिए तुम्हें नहीं समझा। लास्ट क्लास में पूरा बताया था वो चीज, ठीक है। ये थी क्या? दो और सीख लिया इसने, ठीक है। That's it. So this chapter is over. ठीक है, देख लो कुछ सीखना है इसके अंदर। सेफ्टी प्रिकॉशन मैंने बता ही दिया, ड्राई और लूज नहीं होना चाहिए, लाइव को टच नहीं करना, स्विच ऑफ करके ही प्लग सॉकेट ऑपरेट करना, ठीक है। ये सारा 15 मिनट है, तो आई विल इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, so because you still have like 3 chapters to go: electromagnetism, heat and modern physics, atomic physics वाला जो है ना, क्या है वो लास्ट वाला? modern physics है ना, Calorimetry. that is heat, calorimetry, radioactive, which is modern physics, ठीक है। So in this chapter electromagnetism, there are no numericals, in electromagnetism. Yes, God smile. But there are lot of concepts. ठीक है, grin. Okay. So it's a roller coaster. Huh? All right. So if the soul has rested in peace, how do they call them with voodoo? Voodoo experiments. They invite. मेरे को वो बता देना मेरे को जरा पता करके. Don't ask your dad. Ask your dad. Huh? You basically make contact with dead people. There is a method. So they call it voodoo, if I'm correct. She is the expert in that. How many souls have you invited? Huh? So you sit in a room with one candlelight and then you start talking and then he comes, you have conversation and then bye-bye. सोते भी हैं?
हाँ सोल तो होता ही है ना, नहीं तो तुम कैसे होते? See, if you can very easily understand it with the help of conservation of energy law of conservation of energy. What are we? We are devices, okay, with energy in us. Calories है ना? Yeah. So we have energy na. Energy cannot be created, it cannot be destroyed. Where will our energy go? It will just change form. So even with laws of physics, nothing is destroyed. That energy, when we decompose, will be releasing lot of energy. Where that energy will go, it cannot be destroyed. So it will take another form. It may manifest as water, anything. I mean, tree, donkey. Depends on the karma. In Christianity, we do that on Good Friday. Yes, voodoo, right? Do we call it voodoo? No. It may be a slang, I may not know the correct word, but she knows, I mean, she nodded, voodoo, right? Is the term voodoo? Voodoo ही बोलते हैं, but डॉल बनाते हैं उसको सुई चबाते हैं. No, sir. In Christianity, we have a ritual for that. yes, We close the doors and some steel. it's very similar, like in all religions, now few things are very same. At a spiritual level, things are. Oh, okay. Family source. सर वुडू ये पहली बार बोली है, पूरे साल भर में पहली बार बोली है. I've not heard of it. हाँ बोल, क्या बोली? वुडू जिंदा लोगों के लिए लाइक जिंदा लोग जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो मरे वाले को बुलाने को क्या बोलते हैं? है ना? तो ठीक है, छोड़ो जाने दो. It's not a subject of physics. In physics, we study about dead things only. Physics is all about non-living things. So anyway, we are studying about dead things, right? We have that. Chalo. Let's start with electromagnetism. So it's the spirit, okay? Spirit, right? Spirituality. So at spiritual level, we all are same. Whether it is a small child, everybody has a spirit. Okay? So this is the biggest unifying factor across everybody. So it's not religion, it is spirituality. It's different. So in physics class we cannot discuss this. It's very big. Alright. So what is electromagnetism? So first thing is magnetic effect of current. Magnetic effect of okay. If you have any questions, you can just ask me. No need to take stress. So I will relieve you. Okay, magnetic effect of current, right? क्या होता है? देखो. There was a scientist by the name Oersted. What did he observe? He observed whenever current is passed through a conductor. Okay? So how do we pass a current? So we pass a current by connecting some source of current, which is cell, right? Cell or a battery. So when a current is passed in the circuit, it's going to start going like this. Okay? So if there is a, let's say this is north-south direction. So we know that if we take a magnetic compass, it will always rest in north-south direction, right? In the direction of Earth's magnetic field. Whenever you take a magnetic needle, it should always rest in north-south direction. Okay? So this is geographic north, this is geographic south. But when it was kept near the conductor, let us say we have a table, right? This is our table, and we have made an arrangement so that this wire actually enters from below the table. Okay? This wire enters from below the table. So this is a plane perpendicular.
right? Like the wire is passing from down and coming up from here. Yes. Okay. So now, if this compass was like this, when no current was passed, like when it was off, okay, it was resting like this. But when the current was passed, then it showed deflection, meaning there must be some magnetic field, because magnetic needle will deflect only in the presence of other magnetic field or other source of magnet. That means this current flow has got something to do with the deflection of this compass, right? So what happens is, at this point, it shows a deflection in this direction. Then when the compass was kept here, then it started showing a deflection in this direction, here in this direction. So when we joined all the dots, we found that it completes a circular path. Understood? So whenever there is a current which is flowing through a given wire, it generates circular magnetic field lines around itself. And the direction at any point is along the tangent. And tangent can have two directions, this as well as this. So which direction to take? That is given by right hand thumb rule. Right? So what Oersted observed? There is concentric magnetic field lines. Okay, around is single line. There is concentric magnetic field lines around a plane perpendicular to current carrying wire. Current carrying wire in accordance with right hand thumb rule. ठीक है? मतलब कि suppose this is the plane, okay, and this is how the wire is. So this plane is perpendicular to the wire, right? So how will be the field? So if the direction of current is this way, so thumb is in the direction of current. Then if I curl the fingers around, right, that is the direction of the magnetic field. Got it? So like wire is like this, so finger is curled in the concentric. Okay. So at any point, let us say here, I want to find out what is the direction of the field. So I will bring the tip of the finger here at this point. So tip of the finger is coming towards me. Right? So field will be pointing towards me. Got it? So it will be in this direction. यहाँ पे क्या होगा? This point is here. This way. Tangent. Got it? So on the curve, you can find the direction at that point by drawing a tangent there, and the direction as per right hand. The fingers curled, the fingers of the right hand curled, and wherever the tip is pointing at that point, this is right hand side. So for today, I think I'll stop here and I'll explain this experiment. What is going on in this experiment? So you understood how the magnetic compass is deflected. Okay? So what is the rest position? North south. Okay? Now see the first diagram. What is shown in the first diagram? Everybody has a book. So the compass is kept below the wire. Now sit in front with somebody who has a book. Compass, the magnetic compass is kept below the wire.
So in the first diagram, the magnetic compass is aligned in the north-south direction. Why? Because there is no current, the key is open. In the first diagram, there is no current, so key is open. Now look here, everybody pay attention here. So it is not deflecting. What happened in the second diagram? When the key is closed, it is deflecting on the left side. Why? Where is the compass kept? Below the wire. And if you apply the right hand thumb rule, where is the tip? So the needle is pushed. Okay? Pushed on the left side. Got it? Where is the tip? Below the wire. Wire is like this. Where is the compass? Here. So it was pointing north-south. When it comes here, so initially like this, right? Let's say the bottom one is compass. So when this needle comes here, it pushes in this side. It becomes like this. Okay? Understood? Now, so that was the second diagram, right? Now if you change the direction of current, see the polarities of the battery in the second and third diagram. Now the current direction is changed. Then it is pushed on the other direction. Because now what you have to do? Earlier it was like this, now it is like this. So it is pushed outside. Clear? Clear now? So this is the second case. In the third case, what is being done? Third I explained. Now the compass, now the same thing can be observed with the keeping the compass now above the wire. Now you tell me what will happen when the compass is above the wire and the current direction is like the second direction, second diagram. So how it is happening? This is the above, this is the wire which is carrying current. Okay. So what happens? So it will come right. See, this is the wire in which current is going, right? Right? And then the compass needle is above. So what happens? It comes right side. That is what is happening in fourth diagram. And now when the current direction is reversed, it will show the deflection in the opposite direction. Is it clear? तो ये खुद से करके देखो, अभी भी 5 मिनट है, ठीक है? So why the compass of the magnetic needle is deflecting? Due to the presence of magnetic field around the current carrying wire. ठीक है? This is the observation. So this is magnetic effect of current. And when you switch off the current, the compass rests again in north south direction. So what is the rule to give magnetic field around current carrying wire? Which rule we use? Right hand thumb rule. So don't use left hand. You'll get it all wrong. Okay? Especially lefty students. Anybody lefty here? Okay? You have to always use the right hand to get the magnetic field direction. Okay? And thumb has to be aligned in the direction of current. Right? So let me just write down what is right hand thumb rule. I think this is the last thing for today. So how will you use it? Suppose this is a wire. Okay. So this is the wire. If this is the wire and this is your thumb and this is the direction of current in the wire, then
The tip of the finger will give the direction of magnetic field. Okay? This is how you have to hold the wire. Thumb is pointing in the current direction. So when thumb is, sometimes it moves, sometimes it asks what is right hand thumb rule. So this is the rule. When thumb is aligned, when right hand thumb, very important, when right hand thumb is aligned along the direction of current, then the curled fingers give the direction of magnetic field. Magnetic field lines. Curled fingers give the direction of magnetic field lines. Now this will only tell you whether it is clockwise or anti-clockwise. It is always anti-clockwise, right? So it is always anti-clockwise, right? But what is the direction of the magnetic field at any point on those circular field lines? It is in the direction of the fingertip. So you have to bring your fingertip at that point, and wherever this tip is, see, on a circle, let's say this is a circle. Imagine this is a circle. It is the diameter. So here the tip is coming towards you, but at the diametrically opposite, it is going away from you. Right? अगर ये circle is plane में है, in the plane, right? So where are the field lines? They are in the plane perpendicular to the wire. This you have to remember, right? So many things to be understood. Field lines are always concentric circles in the plane which is perpendicular to the wire. तो ये लिखना पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इस चैप्टर में you don't have numerical, but you have all these concepts. Okay? Is it time? All right. So we have gathered a lot of spirit today, so that it will be enough for next class.